हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दास कदम के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीएलईएक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन बेड सोर्स या प्रेशर अल्सर्स, एक ऐसा टॉपिक जो हर नर्सिंग एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके नॉलेज को नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। ए 78-year-old patient with a history of chronic obstructive pulmonary disease COPD and heart failure is admitted to the hospital with pneumonia. The nurse assesses the patient's sacral area and finds an intact blister filled with serosanguinous fluid. The surrounding skin is non-blanchable erythema. The patient reports pain at the site. Which of the following is the most appropriate initial nursing intervention? A. Apply a hydrocolloid dressing to the blister and reassess in 24 hours. B. Debride the blister to promote healing and reduce pressure. C. Document as a stage 2 pressure injury and initiate a pressure redistribution mattress. D. Classify this as a deep tissue pressure injury DTPI and consult wound care immediately. Correct answer D. Analytical. Explanation यहाँ पे की है intact blister filled with serosanguinous fluid और non-blanchable erythema surrounding the blister। ये इंडिकेटर्स हैं पोटेंशियल डीप टिश्यू प्रेशर इंजुरी DTPI के। एक ब्लिस्टर जो सीरोसैंग्विनियस फ्लूइड से भरा हो और नॉन ब्लैंचेबल एरिथीमा सराउंडिंग हो, एस्पेशली इन ए हाई रिस्क पेशेंट, COPD, हार्ट फेलियर, निमोनिया जैसी एक्यूट इलनेस, यूजुअली एक DTPI का साइन होता है, ना कि सिंपल स्टेज 2 का। DTPI often presents as intact skin with a localized area of persistent non-blanchable deep red, maroon or purple discoloration और a blood-filled blister। पेन और टेम्परेचर चेंजेस भी कॉमन है। इस कंडीशन में वुंड केयर स्पेशलिस्ट को इमीडिएटली कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसकी सिवियरिटी अंडर एस्टिमेट हो सकती है और अर्ली इंटरवेंशन इज क्रूशियल टू प्रिवेंट फर्दर टिश्यू डैमेज। ऑप्शन ए हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग फॉर स्टेज 2 गलत है, क्योंकि ये DTPI हो सकता है और हाइड्रोकोलॉइड्स डीप इंजरीज के लिए आइडियल नहीं होते। ऑप्शन बी डिब्राइडमेंट इज जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर इंटैक्ट ब्लिस्टर्स, especially if DTPI suspected, as it can introduce infection and further damage. ब्लिस्टर को इंटैक्ट रखना बेटर है जब तक वुंड केयर स्पेशलिस्ट इवैल्यूएट ना कर ले। ऑप्शन सी स्टेज 2 क्लासिफिकेशन गलत है। स्टेज 2 typically involves partial thickness loss with a visible open ulcer or ruptured serum-filled blister, but the non-blanchable surrounding erythema and serosanguinous fluid point more towards DTPI with deeper tissue involvement. Question 2. A nurse is developing a care plan for a patient with a Braden scale score of 12. Which nursing diagnosis is most appropriate for this patient? A. Impaired skin integrity related to fecal incontinence. B. Risk for impaired skin integrity related to altered tissue perfusion. C. Chronic pain related to sacral pressure injury. D. Impaired physical mobility related to surgical incision. Correct answer B. Explanation: ब्रेडन स्केल 12 का स्कोर हाई रिस्क फॉर प्रेशर इंजरी को इंडिकेट करता है।
ऑल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन एक ब्रॉडर टर्म है जो मैनी फैक्टर्स को कवर करता है जो प्रेशर इंजरी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मोबिलिटी, एक्टिविटी, सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, न्यूट्रिशन और फ्रिक्शन और शियर। ये सब फैक्टर्स अल्टीमेटली टिश्यू परफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए, इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू फीकल इनकॉन्टिनेंस एक स्पेसिफिक कॉज है, पर ब्रैडन स्कोर 12 ओनली फीकल इनकॉन्टिनेंस से नहीं आता। ब्रैडन स्केल एक होलिस्टिक रिस्क असेसमेंट टूल है। ऑप्शन सी, क्रॉनिक पेन रिलेटेड टू सैक्रल प्रेशर इंजरी गलत है क्योंकि पेशेंट को अभी तक प्रेशर इंजरी नहीं हुई है। ब्रैडन स्कोर रिस्क असेस करता है, एक्चुअल इंजरी नहीं। ऑप्शन डी, इंपेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, पर ब्रैडन स्कोर के कॉन्टेक्स्ट में ब्रॉडर रिस्क फॉर स्किन इंटीग्रिटी इज द प्राइमरी कंसर्न। क्वेश्चन 3, a patient is admitted to the intensive care unit ICU after a major stroke, leaving them comatose and requiring mechanical ventilation. The nurse identifies a need for proactive pressure injury prevention. Which intervention should the nurse prioritize to prevent shear injury? A, elevating the head of the bag to 60 degrees to improve respiratory function. B, repositioning the patient every 4 hours using a lift sheet. C, applying a transparent film dressing to bony prominences. D, ensuring adequate protein intake and hydration. Correct answer B. Explanation, shear injury तब होती है जब स्किन स्टेशनरी रहती है while underlying tissue moves, लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। पेशेंट को रिपोजिशन करते वक्त अगर स्लाइड करते हैं तो शियर फोर्स अप्लाई होता है। यूजिंग अ लिफ्ट शीट ड्यूरिंग रिपोजिशनिंग इज क्रिटिकल टू प्रिवेंट शियर इंजुरी। लिफ्ट शीट अलाउ करता है नर्सेस को पेशेंट को लिफ्ट करके मूव करने में रेदर देन ड्रैग करने में, thereby reducing friction or shear forces. Option A, elevating HOB to 60 degrees actually increases the risk of shear, especially over the sacrum, as the patient tends to slide down. HOB elevation should ideally be capped at 30 degrees or less when not contraindicated. ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बट इट डजंट डायरेक्टली एड्रेस शियर फोर्सेस कॉज्ड बाय मूवमेंट। ऑप्शन डी, एडिक्वेट प्रोटीन एंड हाइड्रेशन ओवरऑल स्किन इंटेग्रिटी के लिए एसेंशियल है, बट डायरेक्टली शियर को प्रिवेंट नहीं करता। क्वेश्चन 4, a 65-year-old diabetic patient presents with a sacral pressure injury. The wound bed has granulation tissue, some slough less than 25% and moderate serous exudate. The surrounding skin is intact. The nurse identifies this as a stage 3 pressure injury. What type of dressing is most appropriate for this wound? A, wet to dry gauze dressing. B, calcium alginate dressing. C, hydrocolloid dressing. D, transparent film dressing. Correct answer B. Explanation, stage 3 pressure injury involves full thickness skin loss and may extend to the subcutaneous tissue. Granulation tissue और मॉडरेट सीरस एक्सुडेट इंडिकेट करते हैं कि वुंड को एक्सुडेट मैनेजमेंट और मॉइस्ट वुंड इन्वायरमेंट की जरूरत है। कैल्शियम एल्जिनेट ड्रेसिंग्स हाईली एब्जॉर्बेंट होते हैं और मॉडरेट टू हैवी एक्सुडेट को मैनेज करने में इफेक्टिव है। ये मॉइस्ट वुंड हीलिंग इन्वायरमेंट भी
प्रोवाइड करते हैं जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ऑप्शन ए, wet to dry gauze is generally not recommended for clean granulating wounds because it can disrupt new tissue upon removal, cause pain and dry out the wound bed. Option C, hydrocolloid dressing can be used for stage 2 wounds with minimal exudate, but it's not ideal for moderate exudate in a stage 3 wound. It might not have enough absorptive capacity. Option D, transparent film dressing is primarily for stage 1 or stage 2 wounds with minimal to no exudate or for protection against friction. It has very limited absorptive capacity and is unsuitable for a wound with moderate exudate. Question 5. A patient with a stage 4 pressure injury to the ischium requires daily dressing changes. The wound care nurse notes undermining and tunneling. Which action is most important for the nurse to perform during each dressing change? A, gently irrigating the wound with normal saline using a 35 ml syringe with a 19 gauge needle. B, packing all undermined areas and tunnels loosely with moist gauze. C, applying a topical antibiotic ointment liberally into the wound bed. D, debriding necrotic tissue using sharp debridement at the bedside. Correct answer B. Explanation: undermining or tunneling deep pressure injuries, especially stage 4 के कॉमन फीचर्स हैं। इन एरियाज को प्रॉपरली मैनेज करना एसेंशियल है ताकि डेड स्पेस रिड्यूस हो, इन्फेक्शन प्रिवेंट हो और हीलिंग प्रमोट हो। Loose packing with moist gauze ensures that all pockets and tunnels are filled, keeping the wound bed moist and preventing premature closure of the skin over unhealed areas, which could lead to abscess formation. However, packing should be loose, not tight, to avoid causing additional pressure and compromising circulation. Option A, irrigating with normal saline is good practice, पर इतना high pressure 35 milli syringe with 19 gauge needle can damage delicate tissue. Low pressure irrigation, e.g. 30 to 60 milli syringe with a 18 to 19 gauge angiocatheter or soft catheter tip is preferred. While important, ये 3 as critical as addressing the undermining and tunneling itself. Option C, topical antibiotic ointment का indiscriminate use resistance develop कर सकता है और systemic infection के absence में routine नहीं है। Antimicrobial dressings use कर सकते हैं, but liberally applying antibiotic ointment is not the most important routine step for undermining and tunneling. Option D, sharp debridement at bedside एक स्पेशलाइज्ड स्किल है और जनरली वुंड केयर स्पेशलिस्ट या फिजिशियन के थ्रू होता है, नॉट अ रूटीन नर्सिंग एक्शन फॉर एवरी ड्रेसिंग चेंज अनलेस specifically ordered and within nurse's scope of practice. Necrotic tissue is present in stage 4, but the immediate priority is packing the undermined areas. Question 6. A 90-year-old bedridden patient with dementia is at high risk for pressure injury development. The family asks the nurse about the most effective single intervention to prevent pressure injuries. Which response is most accurate? A, we will ensure
frequent repositioning, ideally every 2 hours. B. We use special pressure reducing mattresses and cushions. C. We will monitor her skin daily for any signs of redness. D. We keep her skin clean and moisturized at all times. Correct answer A. Explanation: while all options are important aspects of pressure injury prevention, frequent repositioning, ideally every 2 hours, is considered the single most effective intervention, especially for bedridden patients. Pressure को relieve करना is the cornerstone of prevention. Continuous pressure on bony prominences leads to tissue ischemia, जो इवेंचुअली प्रेशर इंजरी में रिजल्ट करता है. रेगुलर रीपोजिशनिंग redistributes pressure, allowing blood flow to return to compressed areas. Option B. Pressure reducing mattresses are important adjuncts, but they don't eliminate the need for repositioning. They reduce but do not completely relieve pressure. Option C. Daily skin monitoring is essential for early detection but not a preventive intervention itself. Option D. Skin hygiene and moisturization is important for maintaining skin integrity but does not address the primary cause, which is sustained pressure. Question 7. A patient with a sacral pressure injury has developed a fall order, increased pain and purulent drainage. The wound culture report shows Pseudomonas aeruginosa. The nurse anticipates an order for which type of dressing? A. Hydrogel dressing. B. Silver alginate dressing. C. Non-adherent foam dressing. D. Transparent film dressing. Correct answer B. Explanation: foul odor, purulent drainage or a positive culture for Pseudomonas aeruginosa indicate wound infection. सिल्वर एल्जिनेट ड्रेसिंग्स एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखते हैं ड्यू टू द सिल्वर आयंस रिलीज. सिल्वर इफेक्टिव होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया के अगेंस्ट इंक्लूडिंग स्यूडोमोनास एरिजिनोसा और इन्फेक्शन को मैनेज करने में हेल्प करता है व्हाइल आल्सो एब्जॉर्बिंग एक्सुडेट. ऑप्शन ए हाइड्रोजेल primarily provides moisture to dry wounds and has most significant antimicrobial properties. Option C, non-adherent foam is good for exudate management and cushioning, but it lacks antimicrobial action against infection. Option D, transparent film is contraindicated in infected wounds as it creates an occlusive environment that can worsen bacterial growth. Question 8. The nurse is caring for an obese patient with limited mobility who has developed a pressure injury in the abdominal pannus fold. Which intervention is specifically important for managing this type of pressure injury? A. Regular application of a barrier cream to the wound edges. B. Using a foam wedge to keep the pannus elevated and separate from the skin below. C. Frequent dressing changes with a hydrocolloid dressing. D. Initiating a high protein, high calorie diet. Correct answer B. Explanation: abdominal pannus fold में pressure injuries, intertriginous dermatitis, skin on skin friction और मॉइस्चर एसोसिएटेड स्किन डैमेज MASD से ऑफन डेवलप होती हैं. की इंटरवेंशन यहां पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट को एलिमिनेट करना है यूजिंग अ फोम वेज या अदर मॉइस्चर विकिंग मटेरियल टू कीप द पैनस एलिवेटेड एंड सेपरेट creates an air circulating environment, reduces friction, moisture buildup और allows for better visualization and healing. Option A, barrier cream
कैन प्रोटेक्ट पेरी वुंड स्किन फ्रॉम मॉइस्चर, पर ये अंडरलाइंग कॉज स्किन ऑन स्किन कॉन्टैक्ट और फ्रिक्शन को एड्रेस नहीं करता। ऑप्शन सी, हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग माइट बी यूज्ड फॉर सम वुड टाइप्स, बट in a deep fold with moisture it might not adhere well and could exacerbate moisture issues if not managed correctly. Option D, high protein high calorie diet overall healing के लिए important है, पर directly local management of the pannus fold injury को target नहीं करता। Question 9. A patient with a sacral pressure injury has an unstageable wound due to extensive scar. The physician orders debridement. The nurse understands that debridement is contraindicated in which of the following scenarios? A. The scar covers the heel and is stable, dry and intact without erythema or fluctuance. B. The patient has a severe coagulopathy. C. The wound bed has signs of heavy purulent exudate and fever. D. The patient reports severe pain during dressing changes. Correct answer A. Explanation: stable, dry, intact scar on the heel, especially in patients with peripheral arterial disease, को जनरली डिब्राइड नहीं किया जाता अनलेस इन्फेक्शन के साइंस हों। हील का एस्कार प्रोटेक्टिव बायोलॉजिकल ड्रेसिंग प्रोवाइड कर सकता है। रिमूविंग इट कैन एक्सपोज डीपर टिश्यूज टू इन्फेक्शन और फर्दर इंजरी। दिस इज ए क्लासिक एक्सेप्शन टू डिब्राइडमेंट रूल्स। ऑप्शन बी, severe coagulopathy makes sharp debridement risky due to bleeding, but it doesn't contraindicate other debridement methods, for example autolytic, enzymatic if necessary. Option C, heavy purulent exudate and fever are signs of infection, जो debridement especially to remove infected tissue को और भी necessary बनाते हैं। Option D, severe pain indicates the need for pain management strategies before and during debridement, but it is not a contraindication for debridement itself if required for healing. Question 10. A nurse is educating a family about preventing pressure injuries for their elderly parent who is largely immobile at home. Which statement by the family indicates a need for further teaching? A. We bought special donut cushions to use when mom sits in her wheelchair. B. We check mom's skin every day, especially over bony areas. C. We make sure mom gets plenty of fluids and eats nutritious meals. D. We plan to turn her every 2 to 3 hours even at night. Correct answer A. Explanation: donut cushions are generally contraindicated for pressure injury prevention or management. While they seem to relieve pressure, they actually cause pressure redistribution to the areas around the donut, leading to increased pressure on those areas and potentially obstructing circulation, worsening the risk of pressure injury. Instead, pressure redistributing cushions designed for wheelchairs should be used. Option B, daily skin checks is crucial for early detection. Option C, fluids and nutrition are vital for maintaining skin integrity and overall health, which supports prevention. Option D, turning every 2 to 3 hours is the cornerstone of pressure injury prevention, ensuring pressure relief. वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक करें, शेयर करें और चैनल नर्स विकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये एमसीक्यूज आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम।